So, very good morning, all of you. So, this is Santosh Kumar Sutar, and welcome to Dear Sir. So, dear friends, so in this video lesson, we are going to start with your poetry section of Invitation One book. Okay, so Invitation One book, we are consisting of two parts. It is your prose and poetry section. So, we shall start with your poetry section. That in the last video lesson, we have hello Nitesh. Okay, very good morning. Then we have discussed one of your poem, that is Daffodils by William Wordsworth, and it is completed. Then it is the second poem of your poetry section. Okay, second poem of your poetry section, that is the Ballad of Father Gilligan. Okay, so let's do with the poem. Okay, let's start. Now let's start with the poem. Okay, okay. So now with this we shall start with your uh, poetry section. The second poem is your poetry section is, that is a ballad of the Ballad of Father Gilligan. Okay, so this is your second poem. Okay, this is your second poem of poetry section. This is your second poem. Okay, just mention it. The second poem. Second poem of poetry section. Okay, so this is the second poem of your poetry section. So we have, okay, hi, good morning all of you. Okay, so now this is the second poem, and the first poem we have already discussed. So the second poem is your the Ballad of Father Gilligan. Here the name of the poem, the poem title as Ballad of Father Gilligan by William Butler Yeats. Okay, William Butler Yeats. Tale, this is a picture of your poet. Okay, this is the picture of your poet. You can see here. Okay, you just notice here the picture of your poet. This is William Butler Yeats. So here the poem title as The Ballad of Father Gilligan. So what does the title suggest here? Okay, so in a context where we are giving a title, जेमते हमें देखो तले report writing रे, we are giving a headline, we are giving a title. Okay, headline or title or headline or headings. So title is something that represent the context, that represent the aim and purpose of something. Okay, so title is very important. While we are writing a context, we are making a context, we have to give a title. It's the context, so that while a reader is trying to read, while the reader is going through it, and first of all he will encounter with the title, and he will know the brief details, the basic details or something. He gets some kind of information, introduction or basic information about the context. Okay, so similarly, while we are dealing with the title here, the title is The Ballad of Father Gilligan. First of all, uh, we shall know what a ballad is. First is Ballad of Father Gilligan. Okay, father means here, father हमें उड़िया रे कौचे कौन? It's your बापा की जहाँ कौचे. So father here refers to, first of all we shall deal with the word ballad. What do you mean by ballad? So ballad is a form of poem. Okay, form of poetry.
गोटे आमर पोएटिक फॉर्म गुड़ा अच्छी बैलेड अच्छी एलिजी अच्छी ओके सो डिफरेंट टाइप्स रो जो फॉर्म्स गुड़ा अच्छी एपिक अच्छी ताले से सब रु आमे बैलेड देखिबा बैलेड इज ए फॉर्म ऑफ पोएम और फॉर्म ऑफ पोएट्री पोएट्री गोटे फॉर्म अछि हला ऑफ फादर गिलिगन हाउ बैलेड होची से गोटे पोएम जोटा कि दैट टेल्स ए स्टोरी आल्सो ओके ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी it is descriptive and it tells a story also and it is father of ballad of whom father Gilligan father refers to the priest in the church रो गोटे priest मान को जो आमे हमर जेमती मंदिर रे पूजारी अछि ब्राह्मण अछंती तो सिमिलरली क्रिश्चियनिटी रे तांकर जो प्लेस ऑफ वर्शिप अछि मान जीसस क्राइस्ट को पूजा करजंती क्रिश्चियनिटी रे and there the person who appointed to regulate the church रो रेगुलेशन पाई चर्च रो जो वर्शिप ये पाई जहा को अपॉइंट करा जाय थे ताकू हमें फादर बोली को जाय क्रिश्चियनिटी वी आल्सो नो दैट इज यूजुअली ही इज नेम्ड एज फादर ताकू फादर बोली समस्त कहंती गिलिगन इज अ नेम okay so then name of the father is Gilligan the name of the Gilligan is a person name who is appointed as the father of a church okay that person Gilligan is appointed as the father of a church so that he is known as father Gilligan taku father Gilligan boli kha jauchi and it is the story ballad means it's a poet form it's a poetry form that tells a story what a poetic form re ame story taku padiba that this poem is deals with the story of father Gilligan okay now got it clear the story of father Gilligan through the poem we will study we will read we will come to know about the story what happens there what happens with father Gilligan से तो कौन घटिची कौन हेची कि कौन सब जिंस सेठी देखा देची फादर गिलिगन कौन कहिची से सब जिंस काम वर्तमान पढिबा सो इट इज बाय विलियम बटलर येट्स ओके याकू डब्ल्यूबी येट्स बोली कहा जाय बहुत जगह रे तुमे देखिबो डब्ल्यूबी येट्स लिखा जाय थाए ओके डब्ल्यूबी येट्स भी लिखा जाय थाए विलियम बटलर येट्स फुल फॉर्म मींस विलियम बटलर येट्स बहुत जगह रे कॉन्टेक्स्ट रे डब्ल्यूबी येट्स भी लिखा जाय थाए सेम पर्सन नाउ दैट इज इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर आमे वर्तमान ऑथर विषय किछि जानिबा सो कम टू ऑथर इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर ताले ऑथर एठी जेतु गोटे हमें पोएम पढिबा पोएम मींस हियर इट्स ऑथर और यू कैन राइट ए पोएट ओके इंट्रोड्यूसिंग द पोएट विषय वर्तमान पढिबा ओके सो इट इज विलियम बटलर येट्स 1865 to 1939 is an Irish poet ताले हमें देखिले विलियम बटलर येट्स डब्ल्यूबी येट्स जे अछंती से कोन अछंती 1865 रे तांकर एटा फास्ट जो देखिबो तुमे सब कॉन्टेक्स्ट रे जो तुमरो लेखा जाउची फास्ट गोटे ईयर लेखा जाउची कि डेट एंड ईयर लेखा जाउची सेकंड रो डेट एंड ईयर लेखा जाउची फास्ट ईयर होची तुमरो ईयर ऑफ बर्थ फास्ट जोटा ईयर लेखा होची फास्ट ईयर और डेट जोटा लेखा जाउची सेटा होची ईयर ऑफ बर्थ देन सेकंड जोटा लेखा जाउची सेकंड ईयर और डेट रे जोटा लेखा जाउची ताकू आमे कहिबा ईयर ऑफ डेथ ओके तले से केबे ताकर जन्म केबे मृत्यु हेतला एटा को आमे देखिबा इज एन आयरिश पोएट आयरिश मींस द पर्सन बिलोंग्स टू आयरलैंड ओके ही इज एन he belongs to the country of Ireland से आयरलैंड रो गोटे पोएट थिले पोएट हिसाब रे एंड ड्रामाटिस्ट आल्सो एंड ए मिस्टिक ओके ड्रामाटिस्ट मीन्स होची द पर्सन हु राइट्स प्लेज एंड ड्रामा पाई जो माने प्लेज नाटक जो माने लिखंती ताको ड्रामाटिस्ट को जाय एंड ए मिस्टिक आल्सो मिस्टिक मीन्स ए honest person is sage like things okay the person who believes in truth the person who believes have strong faith in God जे कि भगवान को ऊपर जो मन कर भरोसा अछि भगवान को जो मन विश्वास करते मिस्टिक मन को भी कहा जाय okay you can call them mystic and he was awarded the Nobel Prize for literature in 1923 ताकू 1923 रे लिटरेचर पई कोन करा जायतला नोबेल प्राइज अवार्ड करा जायतला ओके नोबेल प्राइज जेंति नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर अछि नोबेल प्राइज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर फिजिक्स जेंति अछि तुम्हारा इकोनॉमिक्स अछि सब
पाई जेमति मिलुची Nobel Prize. So similarly she was awarded the Nobel Prize in the year 1923 for literature पाई तांको मिलितला. Okay, then आमे देखियो mystic. Okay, write down mystic is a person, mystic, a person. Good morning Dharmendra. Okay, very good morning. Person having faith and trust on God. Okay, भगवान को प्रति भरोसा रखुवा भगवान को विश्वास करथि लोक को आमे मिस्टिक बोली कहता. ताले आमे देखले William Butler Yeats is a poet. He belongs to the country of Ireland. Then and he was the year of his birth is 1865 and the year of his death is 1939, and he belongs to the country of Ireland. He was an Irish poet, and he also writes dramatist, so that we call him a dramatist. And he was a mystic also. Mystic means we already discussed, that is a mystic is a person having strong faith, having a belief, having a trust upon God, भगवान को विश्वास करते लोग. And she was also awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. Okay, got it clear? Then come to the next. Then what is ballad? I mean, what is ballad? Ballad mu kon kahili? Ballad is a poem. Okay, it is a poetic form that tells a story in the form of a poem. It actually describes a story. It actually deals with a story. So different. What is the ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ in details रे पढ़िबा what a ballad is. What is a ballad? Ballad को हमें कौन बोली, ballad कौन बोली हमें जब पढ़िबा, then what is a ballad? ताले okay, so ballad रो meaning हमें एटे जदी देखिबा से कहूची कोन, a ballad is a poem with musical quality. Okay, गोटे musical quality थिबो एथिरे आमे जेंतु गोटे song जेंतु कहूचे गोटे musical quality अछि तादरे. तो हमें गोटे ballad देखिबा, it is meant to be song. एटा जेमती गीत बोला जाउछि सेही टाइप रो गोटे एटा हमकु देखिया म्यूजिकल क्वालिटी, गोटे म्यूजिकल टोन एथिरे हम देखिया को पाइबा. एंड इट इज समटाइम्स सेट टू म्यूजिक आउ समटाइम्स इट इज सेट टू म्यूजिक. एटा केबे केबे म्यूजिक सहित भी सेट कहउछि, म्यूजिक सेटिंग सहित रिलेटेड. ए बैलेड इज ए नैरेटिव. Ballad is narrative in nature. Narrative means which is descriptive. Okay, usually एटा बहुत जिंस को describe करे. So usually हमें जेतबे स्टोरी पढुचे, स्टोरी टा इज ऑलवेज descriptive. स्टोरी रे जदी हमें स्टोरी टा देखि, स्टोरी जे कोन से स्टोरी देखो तो स्टोरी it is mainly the story has no short features. ताकर शॉर्टकट किछ फीचर न थाए. तो स्टोरी गुडा सबले गोटे लेंथी फॉर्म में, गोटे लेंथीएस्ट फॉर्म में लिखा जाए, गोटे narrative form में लिखा जाए. सब गोटे स्टोरी टा गोटे narrative form लिखा जाए, so that ballad describes the story, so that it is narrative in nature. Okay, narrative रहिबो सब गोटे, descriptive रहिबो. Narrative means descriptive. Write down. Sorry, just descriptive in nature. Okay, that is you can write that is descriptive or that is elaborate. Okay, with a elaboration सेटी कोन थिबो, एलाबोरेटिव नेचर थिबो, डेस्क्रिप्टिव हेतिबो, एक्सप्रेसिव बहुत जिंस डिस्कशन हेतो, तादरे डिस्कशन हेतिबो बहुत जिंस हेतरे ऐड हेतिबो. सो दैट देन नेक्स्ट दिस means that it tells a story. ताले हमें देखिबा बैलाड कोन कहबो, हमें देखिले बैलाड tells a story in the form of a poetry, tells a story. But it usually story we usually read in a prose form. Story टा को हमें गोटे prose form रे पढो. But here we shall deal with the story, we shall read a story in the form of a poetry, in the form of a poem. Poem रो form रे पढिबा. Usually हमें गोटे prose और essay बेस रे prose context रे हमें story टा को पढो, किंतु हमें एठी गोटे different पढिबा. Okay, most ballads are written in ABAB rhyme scheme. Okay,
राइम स्कीम होची जोटा हमर वर्ड रो जो लास्ट तुमर राइमिंग वर्ड हला सेटा हमें पढ़िला बेले देखिबा राइमिंग स्कीम अछि ताकू ए बी जो राइम स्कीम अछि से राइम स्कीम टा राइमिंग स्कीम सब पोएम रो थाए लास्ट रो जो वर्ड गुडा तार प्रोनाउंसिएशन सेकंड जो वर्ड से तो जदी मैच करथिबो तब ताकू हमें राइमिंग स्कीम बोली को लाइन से तो राइम करूची सेटा को हमें देखिबा तल राइमिंग स्कीम आर कोन यूजुअली रहे ए बी राइमिंग स्कीम रहे and which means that lines 1 and 3 rhymes and the line 2 and 3 sorry 2 and 4 rhymes तले एथरे कोन से कहूची कोन लाइन का सहित जो हमें देखिबा पोएम रो केतटा लाइन जो लाइन बेसिक गोटा स्टांजा हुए तेन करी सेठी हमें देखिबा लाइन 1 का सहित एंड लाइन 3 राइम करिवो लाइन 1 टा लाइन 3 सहित राइम करिवो लाइन 2 टा 4 सहित राइम करिवो हला ताकू सेति में हमें ए बी बोली ये करछे सो ओवरऑल हमें बैलेड विषय कोन जानले बैलेड इज ए पोएटिक फॉर्म is a form of poetry which tells a story okay and it is usually folksy it is folk literature okay folk literature हमें देखिया को पाइबा लोक मानकर जो यूजुअली जो कथा कथित जो जिंस से सब रे हमें याकू देखिबा को पाइबा ओके फोक लिटरेचर एटा यूजुअली हम देखिबा को पाइबा फोक लिटरेचर बैलेड देखिबा पाइबा ताले एटी नैरेटिव इन नेचर बुझी परलो यस और नो व्हाट ए बैलेड इज डिड इट क्लियर यस और नो प्लीज कमेंट एटा क्लियर हैला कि नहीं वर्तमान प्लीज कमेंट करो नेक्स्ट हमें देखिबा इंट्रोडक्शन ओके हमें पोएट ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ले देन हमें इंट्रोडक्शन देखो पढ़िबा फर्स्ट अछि द पोएम इज a ballad and tells the tale of Father Gilligan who is exhausted in his service and to aid the dying people and seeks the help of the Almighty. Okay, Almighty here means God. God, heavens we कहले God, H-E-A-V-E-N. Heaven means होची God. Okay, ताले एची Almighty refers to God. ताले हमें ये जो पोएम रे पढ़िबा पोएम रो गोटे इंट्रोडक्शन दला कोन poem is a ballad हमें जो ballad of Father Gilligan कहिछि this poem is a ballad it's a poem in the form of a story and tells the tale means story okay it tells the story of Father Gilligan kaharo the Father Gilligan father होछि church Gilligan होछि the person name so Gilligan रो story एटा कहउछि who is exhausted means completely worry and tired बहुत tired हो जाइथिबा exhausted means होछि tired होछि tired worry okay exhausted means tired who is completely tired से बहुत tired हो जाइछि किए फादर गिलिगन जी से तार स्टोरी विषय हमें पढ़िबा तार स्टोरी कोन पढ़िबा फादर गिलिगन इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड कंप्लीटली टायर्ड इन हिज सर्विस तार सर्विस होची तार जो ड्यूटी अछि तार काम जो अछि हला ताले कामटा एते ताकू प्रेशर ओवरलोड हे जाउची ओवर बर्डन हे जाउची जोटा कि ताकू बहुत एग्जॉस्ट बहुत वरी कर दोची बहुत टायर्ड कर दोची टू एड मींस होची हेल्प टू एड मींस हेल्प to aid means help or serve to give service okay service दबा निजे ड्यूटी करबा हेल्प करबा तने से कोन करछि से एग्जिस्ट को पय हे जाछि टू एड द डाइंग पीपल मींस द पर्सन हु इज ऑन डेथ बेड लोक माने जो मरुचंती ओके वन आफ्टर द अदर पीपल डाइंग एंड सीक द हेल्प ऑफ द ऑलमाइटी हाउ जे कि से कोन करछि से जो लोक मान को अटेंड करछि तो डाइंग पीपल चर्च रे जो फादर थांती तांकर होछि काम कोन से तो रिलीजियस जहाँ सब ड्यूटी तांकर अछि रिलीजियस रेस्पोंसिबिलिटी सेटा से माने करिवे ता सहित along with he has to perform some religious rites to the man who is on the death bed आउ जेते बळे कोनोसी लोक कोनोसी मृत्यु पई पडिछि कोनोसी रोग रे पडिछि ताकू जेते बळे तारो रिलीजियस राइट्स जो होची सेटा होची दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फादर ऑफ द चर्च रो फादर का रिस्पांसिबिलिटी होची सेटा जेते बळे ताक कोनोसी ग्रेवयार्ड को आणुचंती सेठी जो ताको पतापति रहउचंती जो कफिन रे करउचंती ग्रेवयार्ड रे जेते बळे सेठी भी सब काम होची रिलीजियस राइट्स सब फादर कर
तो सिमिलरली एठी हमें देखिबा द पीपल आर डाइंग वन आफ्टर द अदर सो दैट here Father Gilligan was exhausted in doing his service to the people. लोकों को ପାଇଁ सर्विस करी कि से बहुत कोन हे जाय एडजस्ट हे जाय एंड सीक्स द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी आ से कोन करूची भगवान कर आश्रय खोजुची भगवान को से डाकुची भगवान कर सहाय्य खोजुची ओके he seeks the help from God. Seeks means होची that is seek means search or search. Here request you can write. Okay. Sorry. Seek means we can write request also. Request and search you can write also. So now he searches the help from God. He requests the help from God. Okay, got it clear? Then the theme of the poem. Okay, let's go to the theme of the poem. Then poem ro theme kona? Theme means the overall subject, overall idea. Okay, so what is the overall idea of the poem? That is, God is ever merciful. Merciful means that is kind. Okay, kind and helpful. Kind and helpful. So God is always kind and helpful to those who believe him or who has some kind of faith on him, who always praise God. God is always merciful. God is always helpful. God is always kind to them. भगवान सेमानकु सबले साहाय्य करंती सेमानक प्रति दया देखांती सेमानकु सबले साहाय्य करंती. God is ever merciful. भगवान होचते सबले साहाय्यकारी समस्तको काइंड समस्त प्रति दयावान and will help those who seeks his help. आउ कोन भगवान सेमानकु ही साहाय्य करंती जो माने भगवान कर साहाय्य को लोडंती भगवान कर साहाय्य को जो माने खोजंती भगवान को जो माने डाकंती तांकर असुविधा समय भगवान को जेतल डाकंती भगवान सेमानकु साहाय्य करंती. This is the theme of the poem. हमें पढिबा. The poem serves as a reminder to never feel alone and not to be bashful when asking God for his help. ताले ए poem जो हमें पढ़िबा, this poem is going to talk about, this poem deals with, that is as a reminder. Okay, as a reminder means it gives that is gives us a information, gives us a that is it recalls us. Okay, it makes us recall. It हमको मने पकि दोची, makes us remind हमको कोन मने पकोची to never feel. हमें केबे फील करिया कथा न केबे एमती भाबिया कथा न alone, feel alone, that we are alone. Okay, आमे सबुले एका अछि बोली आमे केबे एसो भाबिया कथा न that we are not alone, we are created by God and God is always with us. God is everywhere, omnipotent. Okay, omnipresent. ताले भगवान सब जगह रे अछंती. जदि आमे एकुटिया निजु भाबिया ता माने आमे भगवान को विश्वास करने. ओके, ताले आमे विश्वास करछे माने जदि भगवान को आमे विश्वास करिबा so that we never feel that we are alone or we are lonely. We are always with God and God is always with us. भगवान आम सहित सबले अछंती. And not to be bashful. Bashful means that is to feel shy. Okay, bashful means to feel shy. To feel shy or inferior you can write. निजको छोट बोली भाबिबा, कम बोली भाबिबा, ए सब जिंस लाज करिबा, निजको कम बोली भाबिबा, निजर किछि सेंति किछि निजर स्किल केमति नाही, निज पाखरे सेति की क्वालिटी नाही, ए सब जिंस किछि हमें सेमिति भाबिया कथा न. We should not feel ourselves alone, we should not think that we are alone, we should not be bashful ourselves when asking God for his help. आमे जेतेबेले भगवान को डाकुचे भगवान को ये करूचे, we should be free, we should be very much kind and submissive. Okay, we should surrender ourselves while praying God. आमे जेतेबेले भगवान को डाकुचे आमे सेमती surrender करबा दरकार. आमे सेमती we should not feel shy, we should not feel that is reluctant like this. आमे सेमती किछि feel करिया कथा न. Without any hesitation we should pray God. Okay, now got the poem, sorry, got the theme of the poem. Now next come to the warm up. Okay, there is warm up. Warm up mu कहतली. Warm up, what is the warm up? Who can say? Nitesh and your Dharmendra and kids
who can say what do you mean by warm up? Please comment. Warm up is a preparatory exercise. Okay, a preparatory exercise. A preparatory exercise. ताले warm up होची गोटे preparatory exercise ताको हमें warm up कहचे. So here the warm up is the ballad of Father Gilligan जो poem अछि has a ballad form. ये गोटे ballad form में लिखा जाय छै हमें कहले a narrative poem. Ballad गोटे narrative poem that tells a story हम पढ़ले usually song. एटा कोन करा जाय usually sing रो past participle form हैला sing. एटा कोन करा जाय प्राय तो बोला जाय गीत गाइबा जाय ताको रेगुलर शॉर्ट स्टैंजाज आ कोन देखिबा हमें एथिरे रेगुलर और शॉर्ट स्टैंजाज पढ़िबा छोट छोट स्टैंजा हमको मिलिबो 3 to 4 लाइन्स 4 to 5 लाइन्स रो स्टैंजा हमें देखिबा एंड दैट टेल्स ए स्टोरी आ गोटे आदरे स्टोरी हमें स्टोरी फॉर्म रे पाइबा स्टोरी हमको मिलिबो देखिबा पय इन दिस पोएम इट्स नैरेट ए प्रोफाउंडली मीनिंगफुल स्टोरी एंड इट हैज more overtly religious content than most of his poems. ताले तांकर जेकोनोसी मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स तांकर जेकोनोसी अदर पोएम्स जोगुडा हमें देखिबा जेकोनोसी पोएम भी अछि से पोएम टू ए जो पोएम टा देखिबा इट इज मोर ओवरटली रिलीजियस. ओवरटली मींस दैट इज showing or openly. Okay, exhibit or showing or that is openly, or we can write clearly also. Okay, ताले एठी हमें देखिबा ए जो पोएम टा बहुत ओवरटली अछि बहुत क्लियरली डिस्क्राइब कोन करछि रिलीजियस कंटेंट मींस दैट इज एवरीथिंग दैट डील्स विथ रिलीजन डील्स विथ गॉड भगवान को सहित जो जिंस रिलेटेड भगवान कर विषय रे सब जिंस कहिछि रिलीजियस कंटेंट गुडा इतरे देखियो को मिलुछि एंड इट इज प्रोफाउंडली मींस वेरी डीपली मीनिंगफुल. द पोएम इज वेरी मीनिंगफुल. इट हैज deep it has many things that is informative and grammar complete. ओके ग्रामर आमे देखिबा नेक्स्ट क्लास को देखिबा ग्रामर को जहा रही छै ताक सब कंप्लीट करबा. ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो साइमल्टेनियसली वी विल डील विथ ईच इनविटेशन एवरी सब इनविटेशन सहित आमे डील करी कि जिबा आमे केवल ग्रामर को देखिबानी सब इनविटेशन सहित आमे डील कर सब इनविटेशन को नेकी आमे चलिबा. ओके सो डोंट वरी अबाउट द ग्रामर. So before your examination we are trying to complete the syllabus को हमें examination पूर्वरु as far as possible we will complete and we will also make our revision also. Okay, so don't worry about that. Then this is now the story. It is a profound meaningful, it is very much significant and the story is overtly religious content, both religious concept गुडा हमें देखिया को पाइबा and most of his poem other poems to तांकर writing skill. your question केमिति आसीबो राइटिंग रो स्किल रो क्वेश्चन पैटर्न हमें जो करूचे जेमति तुमरो राइटिंग स्किल जेतेबेले हमें डिस्कशन करूचे सेटा करबा राइटिंग स्किल केमिति केमिति आसुची से सब जिंस डिस्कशन करिया. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके सौम्य you are worrying too much. Okay, so don't be scared of the examination and don't be very much concerned about the question. Okay, question will come, you just make your you just practice जहा करो जहा सब दिया जाउची जहा सब पढ़ा जाउची ताको प्रैक्टिस करो ताको पढ़ो क्वेश्चन जहा आसीबो तो करबो किछ असुविधा नाही. क्वेश्चन केमते आसीबो हम डिस्कशन करिवा. ओके राइटिंग स्किल जो वीडियो हमें करिवा सेथरे हमें डिस्कशन करिवा. ओके ओके थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ दिस इज religious content आमे देखिले the story is about a priest कहतिले priest means होची the person who works in a church रे जो माने अछंती चर्च रो अपॉइंट अछंती चर्च रो सब मैनेजमेंट चर्च रो काम जो माने करछंती ताको priest कहै जाय. हमर जेंति मंदिर रो पुजारी अछंती ब्राह्मण अछंती who being emotionally and physically worn out means tired. Okay,
worn out means also tired or exhausted. ताले से कौन फिजिकली बहुत फिजिकल एंड इमोशनली फिजिकली से बहुत टायर्ड हो गलानी मींस काम करी करी बहुत थकी गलानी एंड इमोशनली आल्सो ही गॉट टायर्ड माने इन मेंटली एंड फिजिकली बोथ एस्पेक्ट रे बोथ लेवल से कौन अछि टायर्ड हो जाई ओके एंड फेल इनटू डीप स्लम्बर स्लम्बर मींस दैट इज स्लीप that is slumber means sleep or deep sleep you can ताले से कौन करिछि बहुत एग्जॉस्ट हो जाइछि okay okay that means you don't have any English book okay 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 we shall provide the your notes after completing the syllabus and the chapters we shall provide you notes okay don't worry about that कौन सब क्वेश्चन आसीबो कौन होबो से सब जिन सब आमे गोटे कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन करिया बिफोर योर एग्जामिनेशन वी शैल certainly do that okay no worries व्यस्त किछि हो नै से सब करिबा don't worry about that जहाँ सब पढ़ा जाउछि से वीडियो को तुम फॉलो करो से सब को देखो से सब को भल से बुझ जहाँ सब क्वेश्चन अच्छी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ओके नो प्रॉब्लम ओके ओके थैंक यू देन ताले हमें देखिबा टेलीग्राम अछि कि सर ओके okay whether it is your telegram or whatsapp group everything will be available or everything information will be given in your group okay don't worry about that the update will go in group re update jibo best nahi okay so don't worry so next continue so as he tale ame dekhiba se kon korichi he was tired and the story tells about that your father Gilligan was too much tired and he now fell into sleep से कौन कर टायर्ड है कि बहुत सोई पड़ी ओके स्लीप मींस डीप स्लम्बर रे सोई पड़ी डीप गभीर निद्रा रे सोई पड़ी आज ही वोक अप जेतबे से उठिची he was horrified by the fact that he could not make it to the bedside of the sick man before he died ताले से जेतबे उठी पड़ी जेतबे निद्रा रे सोई पड़ीला when Peter Gilligan woke up okay Peter Gilligan woke up he realized that he could not make it means make it okay he could not make it here make it means achieve or fulfill or do okay he could not attend achieve or attend he could not attend the bedside of his sick man the person someone is in death bed okay somebody is in death bed केही जने गुटे मृत्यु सेजरे पडितला बहुत सीरियस थिला तार कंडीशन so it is the duty of the priest it is the duty of the priest or father Gilligan who has to attend the person and परफॉर्म द रिलीजियस राइट्स तांकर जो रिलीजियस रिचुअल्स राइट्स जो थाए तांकर सेटा से डेथ पूर्व जनकर से रिचुअल्स करबा को ताकू जिबार थिला बट ही बीइंग वेरी मच टायर्ड इन हिज वर्क very much exhausted in his work he fell into deep slumber so that he missed that man's religious rights से कौन करे से जो religious rights he missed that thing सेटा को से मिस कर देछि तार ड्यूटी रे से ठीक काम करि परनी died and before he died and that no one had performed the rites of blessing ए जो rites of blessing means होछि एटा जो religious rites of blessing जो डेथ बेड रे जो लोक पडिछि तार राइट्स जो करबा कथा ताकू जहा सब तार मरिबा पूर्व मृत्यु पूर्व ता पई जहा सब रिलीजियस परफॉर्मेंस जहा सब करिया कथा okay Subhas fine okay thank you very much thank you and this is
नाउ राइट्स ऑफ ब्लेसिंग कहले कौन सी गोटे मनुष्यर मृत्यु पूर्व जो ता प्रति जो रिलीजियस राइट्स आम तो यूजुअली ओडिया रे कौन जमती मृत्यु जने गोटे डेथ बेड रे पड़ले आमे कौन करू ओके सुबस भाई ओके वेरी गुड थैंक यू वेरी मच एंड आमे जेमती करू कोन जेमती निर्माल्य पानी दिया जाए जेमती हमर भागवत पढ़ा जाए सो सिमिलरली क्रिश्चियनिटी रे तांकर भी सेमती किछि रिलीजियस राइट्स अछि से माने कोन तांकर जहा सब थिबो वी डोंट नो आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द रिलीजियस रिचुअल्स और रिचुअल्स ऑफ ब्लेसिंग्स कोन सब हुए तो हमर जेमती भागवत पढुचंती तांकर सेमती किछि बाइबल पढुथिबे कि किछि गोटे सेमती करथिबे सो दैट काइंड ऑफ थिंग ओके वी नीड नॉट टू concern about that ताले आमे खाली मन रखिबा राइट्स ऑफ ब्लेसिंग ताले राइट्स ऑफ ब्लेसिंग सेठी आमे देखिया को पाइबा से जो राइट्स ऑफ ब्लेसिंग ही कुड नॉट डू द राइट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर द मैन हु इज ऑन डेथ बेड जो लोकटा डेथ बेड रे थिला पडिथिला तार रिलीजियस राइट्स को करि पारने बिकॉज़ ही वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन हिज डेज वर्क तार जो दिनर काम उडा को ही इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन हिज ड्यूटी and so being exhausted he fell into deep slumber and when he woke up he could not he realized that he could not make it se eta ko achieve kari parni se tago duty ta ko perform kari parni then what happened for the dying means the person who is going to die the divine presence in the guise of the priest is an affirmation of a loving and kind god study the poem and find out how it glorifies god ताले वर्तमान पढ़िबा देवस्मिता योर टीचिंग स्टाइल इज सो मच गॉर्जियस ओके थैंक यू वेरी मच देवस्मिता ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर योर lovable comments and okay we shall complete our syllabus in time okay don't before exam yes before exam we shall complete and also we do revision okay don't worry about that we shall do revision we shall complete the syllabus as far as possible आमे जत्ते संभव जत्ते दूर आमे जल्दी ताको सारिया पे चेष्टा करबे ता सहित एग्जाम पूर्व आमे रिविजन करबा डोंट वरी अबाउट दैट वी डू रिविजन्स ओके वी विल डू रिविजन सर्टेनली वी विल डू रिविजन आमे सेटा को रिविजन करबा हला सेति में व्यस्त होना हमर पॉसिबल क्वेश्चन जहा सब भी अछि क्वेश्चन ऑफ पैटर्न डिस्कशन करबा सब करबा ओके don't worry about that and this is now divine presence tale divine presence means hochi god's presence yes before exam and god's presence भगवान कर जो presence भगवान तो सब जगह रे अछंती तले सेठी हमें देखियो को पाइबा कोन it is the guys means hochi in a different appearance in an other appearance in a different look or appearance that is to hide the reality okay ताले ये कहछि से जो इन द गाइज ऑफ गॉड लाइक और कमेंटमेंट what do you want to say what is commitment okay don't worry then it is then your divine presence in the guise of priest ताले आमे वर्तमान देखिबा it is the god who takes the form of a priest जे कि जने गोटे priest रो बेस धरिकी guys means होची गोटे बेस छद्म बेस ताले से गोटे छद्म बेस गोटे priest रो बेस धरिकी an affirmation of loving god and he came here while Peter Gilligan was sleeping in deep slumber and he could not make it to the bedside of the dying man now the god came with the disguise of a person that is the priest in the disguise of a priest and perform the duty of Father Gilligan नो duty को से fulfill करछन्ती and this is the affirmation this is the confirmation याकु हमें एठु पाइबा जानिया को पाइले कि the god is always kind and loving to his
डिवोटी भगवान कौन तांकर डिवोटी प्रति सब काइंड और लविंग रुहंती एटा हमें एथुरु जानिया पई पाइबा ओके नाउ स्टडी द पोएम एंड फाइंड आउट हाउ इट्स ग्लोरीफाइज मींस वर्शिप ओके वर्शिप और प्रेज प्रशंसा करिबा बा पूजा करिबा कौन सी जिंस को तेणुक बर्तमान देखा ग्लोरीज केमिति ग्लोरीफाई करछंती के डब्ल्यूबीएट्स केमिति ग्लोरीफाई करछंती एटा ओके गॉट इट क्लियर यस और नो प्लीज कमेंट सो नाउ द स्टैंजा इट इज योर टेक्स्ट ओके विजन ओके वेरी गुड ओके थैंक यू very much thank you for very much for your appreciations and lovable comments okay now okay thank you Nitesh then text come to the text बर्तमान में text पढ़िबा देखो first this is your stanza number 1 this is your stanza number 2 poetry रे ई जो group of lines जो हमें ताको stanza बोली को ओके हमें याको stanza बोली को stanza ओके याको स्टैंजा बोली को जेमते हमर पैराग्राफ कह जाउची प्रोज कॉन्टेक्स्ट रे सेति पोएट्री कॉन्टेक्स्ट रे पोएम कॉन्टेक्स्ट रे हमें स्टैंजा बोली कहबा सो स्टैंजा नंबर 1 ने हम जे देखिबा द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वाज वेरी नाइट एंड डे फॉर हाफ हिज फ्लॉक वेयर इन देयर बेड्स और अंडर ग्रीन शर्ट्स ले ओके ताले एठी हमें देखिबा से जो हमें पढितले गोटे राइमिंग स्कीम पढितले से राइमिंग स्कीम टा हमें एठी देखिबा देखो The old priest Peter Gilligan was very night and day. Okay, for half his flock were in their beds or under green shirts lay. ताले एठी डे और ले ए माने दीटा राइम करूचंती ए जो लाइन टा प्लस ए लाइन राइम करूची सेठी हमें जो पढितले राइमिंग स्कीम ए बी राइम स्कीम ए जो डे और ले देखो ए दीटा राइम करूची ए दीटा प्रोनाउंसिएशन हमें कला बेले सेटा राइम करूची एटा को हमें कहिबा राइमिंग स्कीम राइमिंग स्कीम सेटा दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एग्जामिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट तुम तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आसुची राइमिंग स्कीम को किछि बेसिकली से सब ऊपर किछि क्वेश्चन नै सो दैट वी शैल स्किप इट नाउ गेट टू द कॉन्टेक्स्ट नाउ ओल्ड प्रीस्ट ताले प्रीस्ट जे अछि के पीटर गिलिगन इज द नेम पीटर गिलिगन इज द नेम एंड ही इज ए फादर ही इज ए प्रीस्ट इन द चर्च एंड ही इज आल्सो ओल्ड से गोटे वृद्ध बुढ़ा हे जेतिबा गोटे फादर बुढ़ा हो जाइतिबा गोटे लोक जे कि चर्च रे काम करूची से बहुत बुढ़ा हो जाइछि ओके सेति पय ओल्ड प्रीस्ट कहछि प्रीस्ट मीन्स होछि हमर जेंति चर्च रे फादर अछंती प्रीस्ट मीन्स होछि पुरोहित हमर जेंति ब्राह्मण अछंती हमर मंदिर रे सेंति क्रिश्चियनिटी रे तांकर चर्च रे से माने जो माने रुहंती फादर तांको से प्रीस्ट कहछि was very means tired also okay write down very means tired very means tired so Peter Gilligan was old okay an old priest old father and he was very से बहुत tired हो जाइए usually old man जे कौन से बुढ़ा हो जाइए तांको जदि अधिक काम प्रेशर रहइबो so that से तो तांकरो एते स्ट्रेंथ नाही बळ नाही तेनु करी से माने कोन usually tired ही हे जिवे so that and at the same time he is an old man and at the same time he is performing the duty very hard वर्क से करूची तेन करी सेति पई वेरी नाइट एंड डे से कोन करूची नाइट एंड डे दिन राति काम करी ताकू माने नाइट एंड डे रेफर्स टू द वर्कलोड एठी दिन राति काम करिवार अर्थ होची गोटे वर्कलोड कथा कहूची ओके इट रेफर्स टू द हार्ड वर्क ही इज डूइंग हिज ड्यूटी very diligently with a very dedicated manner and so that he got tired से बहुत डेडिकेटेडली काम करछि और बहुत टायर्ड भी हे जेछि सेति पई बहुत वर्क लोड रे काम प्रेशर रे फॉर हाफ हिज फ्लॉक वेयर इन देयर बेड्स और अंडर ग्रीन शर्ट्स ले ओके फॉर हाफ हिज फ्लॉक ओके फॉर हाफ हिज फ्लॉक मींस होछि गोटे ग्रुप कथा कहूछि फ्लॉक रेफर्स टू ए ग्रुप फ्लॉक मींस होछि कलेक्शन और ग्रुप यू कैन राइट ओके ग्रुप फ्लॉक टा यूजुअली यूज करा जाय शिप मानक पई फ्लॉक ऑफ शिप को जाय ओके फ्लॉक ऑफ शिप को जाय ताले ग्रुप ऑफ शिप्स ताले एठी जो फ्लॉक्स कोची फ्लॉक मींस हियर रेफर्स टू फ्लॉक तो होची गोटे ग्रुप किंतु फ्लॉक हियर रेफर्स टू द पीपल ओके फ्लॉक हियर रेफर्स टू द पीपल वी कैन
just add a page here. Okay, just to wait. So here flock refers to the people in the parish, PARISH parish. এটা হচ্ছে এই প্যারিস হচ্ছে অলগা। ওকে, প্যারিস মিন্স ইটস এ লোকালিটি। ওকে, লোকালিটি around a church। चर्च रे गोटे लोकालिटी रे गोटे चर्च थिबो, से चारि गोटे जो लोकालिटी जो लोक माने रहउचंती से पाखा पाखी गोटे चर्च अंडर रे गोटे। ओके ओके चंदन, ओके थैंक यू वेरी मच चंदन, थैंक यू वेरी मच। देन ताले एठी फ्लॉक होची आमे देखिबा लोक मानकर जो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द लोकालिटी ऑफ ए चर्च, गोटे चर्च रे। ओके थैंक यू। ताले एठी गोटे लोकालिटी रे जो आमे देखिबा गोटे चर्च रो लोकालिटी रे जो लोक मान रहउचंती से मानको एठी फ्लॉक बोली रेफर करिछि। ओके, फ्लॉक बोली सेही मानको कहै जाइछि, फ्लॉक ऑफ शिप एठी नुह। ओके, देन एंड फ्लॉक्स वेयर इन देयर बेड्स। बहुत लोक कोन अछंती इन देयर बेड्स रेफर्स टू इन द डेथ बेड। ओके, इन देयर बेड्स मींस बेड्स रेफर्स टू डेथ बेड। डेथ बेड मींस मृत्यु पाई बहुत अपेक्षा से माने करिसंती। चंदन थैंक यू वेरी मच। ओके, दाले ताले हमें देखिबा ए जो डेथ बेड, एठी बेड मींस होची डेथ बेड। समस्त मृत्यु पाई समस्त संघर्ष करचंती, ता माने विभिन्न प्रकार रोग रे लोक पडिचंती। होय तो लोक माने वृद्धा है कि बूढ़ा है कि ताकर सब पडिचंती। सब लोक तो बूढ़ा है नथिबे, किछि लोक बूढ़ा लोक कोनोसी रोगग्रस्त है कि लोक माने बहुत पडिथिबे। यू कैन कंपेयर दिस विथ द with our COVID situation, COVID time, COVID pandemic जेतबेले चलेथला। You can see that many it is not only old people, it is also young and child। Okay, youngsters जो मान थिले समस्त जो मान affected हले समस्त माने COVID pandemic जेते टाइप रो हितला। So similarly that kind of thing was happening there। कोठी सेठी सेही टाइप रो जिंस किछि हेछि, so that the people are in their beds means they are under treatment or they are इन द डेथ बेड। से माने बहुत प्रकार मृत्यु सहित संघर्ष करचंती, बंचिया पई संघर्ष करचंती, से सब हेतला। ओके, हाफ ऑफ हिज फ्लॉक्स मींस ताकर जो से लोकालिटी रे जो अधे को अधे लोक प्रायतः समस्त कोन करचंती। शुभ स्वाई, नाइस वे टीच ऑल स्टूडेंट्स, लव यू। ओके, लव यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ देन हाफ फ्लॉक्स वर इन देयर बेड्स। आमे जति देखिबा से जो पेरिस जो लोकालिटी चर्च रो जो लोकालिटी रे देखिबा बहुत लोक सेटिकार हाफ हिज फ्लॉक्स मींस होची प्रायतः 50% रो लोक माने इन देयर बेड्स दे आर स्ट्रगलिंग टू लिव। ओके, बंचिया पई ताकर संघर्ष करचंती, दे आर स्ट्रगलिंग because they are struggling, they are in the beds, in the death beds, माने डेथ बेड रे अछंती। ओके, or under green shirts lay। ओके, lay means sleep, lay means sleep here, or under green shorts means hochi upper surface of। okay, just shorts। okay, next page 80 लिख दो आपने। shorts means upper surface of earth। अर्थ रो अपर सरफेस नॉडेड। ओके, नॉडेड आमे जीपा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नॉडेड अछि, नॉडेड मींस होची मुंडो को नुआइबा, एमती मींस एठी नॉडेड मींस होची घुमेबा, फीलिंग ड्राउजी। ओके, देखिबा सेटा आमे नेक्स्ट आगु को अछि, पोएम रा आगु को अछि, जो स्टैंजा रे अछि आमे स्टैंजा वाइज पढिबा। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी सो हस्टी। आमे पढ़िबा, धीरे धीरे पढ़िबा, स्टैंजा पढ़िबा, तार सब वर्ड मीनिंग करिबा। ओके, स्टैंजा रो सब समरी भी अछि, हमें समरी सब डिस्कशन करिबा। डोंट वरी अबाउट दैट। ताले शॉर्ट्स होची अपर सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ रो अपर सरफेस टा को शॉर्ट होची। ताले से कुछ अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले, अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ने मींस अपर और अपर लेयर ऑफ अर्थ, माने अपर एयर अर्थ रो अपर लेयर ले से माने ता तळे से माने सोई चंदी, मींस दे आर buried। ओके,
under green shirts lay refers to under green shirts lay এটা refer to কোন করছি they are buried okay or buried means ପୋତା ଯିବା କୋଉ ମାନେ ପୋତା ଯିବ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ତ ପୋତା ଯିବନି ତେଣୁ କରି ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ means they are dead এই जो लाइन टा रेफर करछि तांकर जो थिले फ्लक्स बहुत लोक थिले से पेरिस लोकालिटी रो जो चर्च रो लोकालिटी रो बहुत 50% जो हाफ ऑफ हिज फ्लॉक होई जे हाफ ऑफ मींस बहुत लोक सेठी प्राय तो दे आर डेड ताले एठी हमें देखिबा अंडर ग्रीन शर्ट्स ले मींस दे आर डेड से माने कोन हेचति सब मरि जाइछन्ती जोटा कि ताकू कवर दिया जाइछि पोता जाइछि जहा सब टकवा जे तांकर क्रिश्चियनिटी जोटा हमर जेंती हिंदुइज्म रे हमें कोन करछे जेंती डेड बॉडी को हमें कोन करछे ताकू निया लगे कि पोडी दउछे कि ये करछे सब सत्कार करबा पई तो सिमिलरली क्रिश्चियनिटी रे ताकर सब जेंती कॉफिन रे सेवन सब बरी करंती पोती दियंती तेन करी सिमिलरली सेटा हमें देखिबा half of his flock are in their beds बहुत लोग struggle करूचंती संघर्ष करूचंती बंचिया पाई in their death bed and some of them are sleeping under green shirts lay sleeping under means some of them were already dead किछि लोग already मरि भी जाइचंती okay next stanza 1 got clear बुझि परलो कि नहीं please comment okay Barendra Kumar thank you and love you very much okay thank you very much and this is next second stanza में देखिबा second stanza once while he nodded on a chair at the mouth hour of eve another poor man sent for him and he began to grieve okay now देखिबा second stanza में देखिबा कोन once means होची दिने थरे कोन हला while he nodded means होची एठी nodded means होची feeling drowsy okay feeling sleepy हमें कर दवा okay sleepy निद लागिबा okay feeling sleepy inclined to sleep निद आसु जायतला ताके कोन होतला because पीटर गिलिगन को निद आसबार कारण कोन because he was very night and day दिन राति काम करतला बहुत टायर्ड हे जायतला so that हमें टायर्ड ले हमको तो obviously निद आसीबो so similarly Peter Gilligan was worried so that while once दिने कोन हेछि से कोन करछि he nodded on a chair से गोटे चेयर रे बसी नॉड करूछि okay to and fro movement एमती मुंड हलेबा ये करबा ताकू nodded को जाय and feeling sleepy on a chair गोटे चेयर रे बसी कि ताकू sleepy लागुछि drowsy feel करूछि at the moth hour of eve means that is evening okay eve means evening and the moth hour means moth is an insect moth sorry moth means a kind of insect appears at dusk and dawn ताले इंसेक्ट गोटे प्रकार इंसेक्ट क्लास 9 something हमको रूटीन okay routine will be provided in group okay don't worry about that Soumya routine will be given in your group okay thank you we shall provide the routine in group okay timetable ta schedule kebe heichi eta to gote adjustment class arrangement class okay na eta today is a arrangement class it's not your schedule class okay so don't worry our schedule class is usually on your that is Tuesday and your Saturday okay usual class is Tuesday and Saturday and today is your arrangement class because I will not be available tomorrow okay so that I am taking class today okay prepare रहिबो जे किछ असुविधा नै किंतु आज ए जो क्लास टा इट इज योर अरेंजमेंट क्लास इट इज नॉट योर शेड्यूल क्लास it is scheduled class no tomorrow I will be unavailable so that I am taking the class today okay so for that is why I am taking class today but as usual
start schedule class. Schedule हमरो class चली छी, we are taking schedule classes. Okay, but today it is a arrangement class, it's not your schedule class. Okay, but don't worry, we will provide the complete details in your group. Okay, don't worry. Okay, next हमें देखिबा ताले another poor man, the moth hour refers to the moth is a insect appears in dusk and dawn. Moth होचंदी गोटे insect जोटा कि dusk means होची the time before evening and dawn means the time before morning. Morning ର पूर्व टाइम आउ इवनिंग ର पूर्व टाइम रे पूर्व टाइम रे आमे का को moth hour को देखिबा, moth मान को देखिबा ताले moth hour of means होची before evening and it was the time before evening while Peter Gilligan sat on a chair and he felt sleepy. Okay, at that time routine provide करा जिवो. Okay, don't worry please, routine provide करा जिवो. Then ताला हमें देखिबा moth hour if रो moth hour रे हमें ताको देखिया को से सही समय रे नोट करूतला. Another poor man sent for him means होची order. Okay, order. Sent for means and another poor man came to call Peter Gilligan. Gote poor means another, that is poor refers to here weak and tired. Okay, another poor and another old man came to call whom? Peter Gilligan. Peter Gilligan को डाकिया पे आसितला and began to grieve, and now he began to grieve and he began to express his sorrow, and he is also suffering from some kind of that kind of pandemic, that kind of disease है कि जो सेठी चलीतला जो प्रकार पैंडेमिक चलीतला जेंते हमर कोविड सफर ही बहुत लोक मरि गले. सिमिलरली सेठी बहुत प्रकार पैंडेमिक चलतला जोटी कि लोक माने one after the other, some of the flocks, half of the flocks are in their bed रे पड़िथिले, सब डेथ बेड रे पड़िथिले and under green shirts ले बहुत लोक मरि जाइथिले हला कि जो मन को कवर पोता जाइथिला. आ से लोक जे जो आसला ओल्ड मैन आसला, he came and also he came to Peter Gilligan to call him to go to attend the man who is in the death bed. हला कि जे डेथ बेड रे पड़ितला तार जो रिलीजियस राइट्स सब रिलीजियस रिचुअल्स सब ताकू बोधे ये करिया पई से आसीतला. ओके, नाउ स्टैंजा 1 and 2 गॉट क्लियर? यस और नो प्लीज कमेंट. स्टैंजा 1 2 बुझी परलो? यस और नो? सौम्य, बरेंद्र कुमार, शुभ, ओके, चंदन, प्लीज कमेंट. स्टैंजा 1 2 हमें पढ़िले जो बुझी परलो ना नहीं? स्टैंजा 1 and 2. So we completed our stanza 1 and 2 and we will, okay Nitish, okay thank you. Then so it is time now and we will discuss the rest of the stanzas in the next video lesson. So don't worry about that and we will complete the lesson, we will complete the syllabus before your examination, before time, and we will also do revisions. Okay, don't worry about that. We will also discuss about your question pattern and the possible questions, and we will provide the notes, possible notes also. Okay, some students are saying that is that they don't have any English book. Okay, so we shall provide the notes, don't worry. If it is possible for you, you can buy the books. Otherwise we will provide the notes. तुम्हें ये जो वीडियो को फॉलो करले भी तुम्हें जानी परियो, सब बुझी परियो. Don't worry about that. Okay, thank you very much for the appreciation and for the wholehearted participation in this class. Okay, class attend करो सब जिनसे जानी परियो, सब जिनसे बुझी परियो. Okay, so thank you very much, thank you all of you, have a nice day. Okay.